సో కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ ఆందోళన విరమించుకున్నారని అనౌన్స్ చేశారు. మరోవైపు ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా కూడా చేశారు. ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో ప్రెసిడెంట్ సోనం వాంగ్చుక్ మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు లైవ్ చూద్దాం. लोकतंत्र की वो वहाँ भी बहाल हो, ये हमारी उम्मीद है। ये तो मैं अपने हिसाब से कह रहा हूँ क्योंकि मैं उस इलाके से आता हूँ। तो बाकी देश में शिक्षा में खासकर सुधार हो, बदलाव हो, किसी भी बच्चे को, किसी भी अभिभावक को जो इन बच्चों को गुजरना पड़ा उसमें न गुजरना पड़े। मैं आभारी हूँ पूरे देश का और युवा पीढ़ी का और सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद। I welcome this step taken by the government and the Education Minister Dharmendra Pradhan ji to step down in this hour of need. They have shown sensitivity on the part of the government, and I want to congratulate the nation. It's a victory of democracy, and we should all cherish it. At the same time, I thank and congratulate the whole young generation, the Gen Z, particularly the members of CJP who started this whole discussion, and young people, old people, everyone from every corner of the nation who came out to speak for truth. And I hope that we can take this path of peace that was so visible in this movement and continue to be on that and never digress from the path of peace. As we have some kind of victory, it is very important to have humility in victory. Therefore, I appeal to all the young people to rejoice, celebrate, but with utmost humility. Do nothing that hurts others, say nothing that hurts others. Be humble, and that will win the world for you. So with these words, I think that we'll have an era of reforms now. There has been accountability. Now it's time for reforms in the field of education so that we have a robust system that makes us a great nation as we all want. And I hope that this kind of reforms are seen now not only in education but also in governance, where we have fear replaced by love for citizens. Not out of fear governance should be. Similarly, from a fear-free India, we should have injustice-free India, where there is justice in everything, whether it is examination or elections or the corridors of power to the courts of India. We should have justice and corruption-free India in whatever form. We should hope that there will be measures taken along with this to make it a clean governance in our country. So I congratulate everyone on this occasion, and being from Ladakh and the mountains of the nation and being an environmentalist, that the process of democracy restoration that has started in Ladakh will be taken up with utmost sincerity on the part of the government along with the people. There have been some steps to undermine the democracy that has been granted. These would be taken up very sincerely together with the citizens is my hope. Talking of democracy restoration, I also hope that our brothers and sisters in our neighboring Jammu and Kashmir will have the pledge that they were given of restoration of statehood. I look forward to see a great India with this change that people have brought, and I congratulate every citizen once again and thank you all very much. Thank you, sir. Thank you so much. సో పర్యావరణవేత్త, సోషల్ యాక్టివిస్ట్ సోనం వాంగ్చుక్ కూడా దీనికి సంబంధించి స్పందించడం జరిగింది. అంటే దేశంలో ఖచ్చితంగా అకౌంటబిలిటీ అనేది ఉండాలి. ఈరోజు స్టూడెంట్స్ చేసినటువంటి ఈ ఆందోళన కానీ, నిరసన కానీ ఇదంతా కూడా
రానున్నటువంటి విద్యా వ్యవస్థలో సమూల ప్రక్షాళన దిశగా అడుగులు ముందుకు వేయాలని చెప్పి ఆయన ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. సోనం వాంగ్‌చుక్ కూడా మనం చూసాం 20 డేస్ హంగర్ స్ట్రైక్ చేశారు. ఆ తర్వాత కేంద్ర పెద్దలు వచ్చి ఆయనకు నిమ్మరసం తాగిచ్చి హంగర్ స్ట్రైక్‌ని విరమించి చేశారు. ఇప్పుడు ఈరోజు మనం చూస్తున్నాం విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా, అలానే సీజేఐ కూడా ఆందోళనలు విరమించిన నేపథ్యంలో ఆయన కూడా స్పందించారు. ఇది ప్రజాస్వామ్యానికి దక్కినటువంటి గౌరవం. అదేవిధంగా తొలి మెట్టుగా కూడా భావించారు. అందరికీ కూడా ఆయన మరొకసారి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలిపారు. 3 राउंड डिस्कशन सरकार की डेलीगेशन के साथ हमारे हुए हैं। 37 दिनों से जो हमारा जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा था, उस प्रदर्शन की 3 मुख्य मांगे थी। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा, जो भी लीगल केसेस प्रोटेस्टर्स पे, ऑर्गेनाइजर्स पे फाइल किए गए हैं, उन एफआईआर को, उन केसेस को विड्रॉ किया जाए और कोई भी फ्यूचर केसेस प्रोटेस्टर्स या ऑर्गेनाइजर्स के साथ के अगेंस्ट ना लिए जाए। और तीसरी डिमांड हमारी थी 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन उन परिवारों के लिए जिन्होंने नीट का पेपर लीक होने के बाद अपनों को खो दिया। आज अभी कुछ देर पहले धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है, जिसका मतलब हमारी पहली मांग, जो इस पूरी प्रोटेस्ट की पहले दिन से मांग थी, 6 जून को जब हम पहली बार जंतर मंतर आए थे, तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है, जिसका मतलब है कि हमारी पहली मांग जो है मान ली गई है। साथ साथ जो हम लोगों की दूसरी मांग थी कि सारे एफआईआर जो सारे प्रोटेस्टर्स के खिलाफ फाइल किए गए हैं अभी तक, सिर्फ दिल्ली में नहीं लेकिन सारे बीजेपी रूल्ड और बीजेपी एलाइड स्टेट्स में वो एफआईआर विड्रॉ हो जाए, ये भी हमारी सेकंड मांग थी। सरकार ने वो मांग को भी मान लिया है। साथ साथ ये जो विड्रॉल है वो शॉर्टली हो जाएगा। जो एफआईआर फाइल हो चुके हैं, जितना हमें लास्ट इंफॉर्मेशन के मुताबिक 15 से 20 एफआईआर दिल्ली में फाइल हुए हैं, वो सारे एफआईआर की कॉपी सरकार ने अश्योर किया है कि शॉर्टली हमारे साथ शेयर करेंगे। एंड जो कॉपीज है वो 3 से 4 दिन के अंदर इन एनी केस हमें मिल जाएगी। जो विड्रॉल है वो भी शॉर्टली सरकार ने अश्योर किया है कि विड्रॉ हो जाएंगे। साथ साथ इन्होंने ये भी हम लोगों ने एग्री किया है कि फ्यूचर में कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा किसी भी प्रोटेस्टर के खिलाफ, एंड सीजेपी की जो टीम है, जो ऑर्गेनाइजर्स है, उनके खिलाफ। इसी चीज का अंडरस्टैंडिंग में हम लोगों ने सरकार के साथ एक ड्राफ्ट शेयर किया है, जो गारंटी है रिटन में, वो सरकार ने बोला है कि हमारे साथ वो ट्यूसडे तक शेयर करेंगे। हमें आशा है कि ट्यूसडे तक जो गारंटी है सरकार के तरफ से इन राइटिंग ये एफआईआर के बारे में और एनी फ्यूचर एक्शन के बारे में, वो हमें मिल जाएगी। तो आप लोग फॉलो अप कर रहे हैं जो 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन हमने नीट विक्टिम्स की फैमिलीज के लिए मांगा था, उसके लिए सरकार की तरफ से सहमति बन रही है कि जो भी रूल्स और रेगुलेशंस के तहत कॉम्पनसेशन पॉसिबल होगा, एक ऑनररी कॉम्पनसेशन उन फैमिलीज को दिया जाएगा। इसके अलावा हम लोगों ने एक 5 पॉइंट का डिमांड चार्टर भी सरकार के समक्ष रखा था, जिसमें ब्रॉडर एजुकेशनल रिफॉर्म्स, एग्जाम रिफॉर्म्स की बात की गई थी। सरकार से हम लोग लगभग 4 हफ्ते में एक बार फिर से मिलेंगे उस डिमांड चार्टर को लेकर, ताकि हम लोग मिलकर एक ब्रॉडर रिफॉर्म्स पर साथ में काम कर पाए। अगर ये सभी